Hi students, now we are going to study the second and last part of our social studies chapter, the age of machines. In the first part we learned about the machines and their brief history, and today we will discuss about their source of energy. And now we start with the energy for machines. Think of the two machines we talked about in the beginning. Do they work without any energy or do they need some type of power? Human beings eat food to get energy to work. Likewise, machines need food to work. Their food is called energy, power, or electricity. थिंक ऑफ द टू मशीन्स वी टॉक्ड अबाउट इन दी बिगिनिंग. दो मशीनों के बारे में सोचे जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी. डू दे वर्क विदाउट एनी एनर्जी और डू दे नीड सम टाइप ऑफ पावर? क्या वो बिना किसी एनर्जी के काम करते हैं या उन्हें किसी प्रकार की शक्ति की ज़रूरत है? ह्यूमन बींग्स ईट फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क. इंसान को काम करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत है. वह एनर्जी फूड में से मिलता है. लाइकवाइज मशीन्स नीड फूड टू वर्क. देयर फूड इज़ कॉल्ड एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह मशीनों को अपनी काम करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है जिसे हम एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. Coal, mineral oil, natural gas and electricity are the sources of energy. Coal, mineral oil, natural gas and electricity, ये सारे एनर्जी का sources है. These are called conventional sources or non-renewable resources as they will end upon one day if used thoughtlessly. उन्हें conventional sources और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये दोनों सोर्सेस को ध्यान से यूज़ नहीं किया तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे. देन कोल. Earlier machines were run with the steam. To produce steam engines were filled with coal. Coal was the first fuel used for running the machines, but it has the following limitations. Earlier machines were run with steam. पहले सारे engines steam से चलाया जाता था. To produce steam engines were filled with coal. So steam का प्रोडक्शन के लिए steam engine कोल या कोयला से भरे हुए थे. Coal was the first fuel used for running the machines. सबसे पहले मशीन को चलाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया. बट कोल के कुछ कमियां हैं. What are them? It is a non-renewable resource of energy. उन्हें फिर से रिन्यू नहीं कर सकते. It pollutes the atmosphere and leaves a large quantity of residue. यह वायुमंडल को पोल्यूट करता है और बड़ी मात्रा में अवशेष छोड़ता है. It is not available everywhere. यह हर जगह पे अवेलेबल नहीं है. Coal takes millions of years to form. कोल को बनने में लाखों साल लगते हैं. There is a limited stock of coal on the earth and it is feared that it would last for only about 250 years. हमारा अर्थ पर कोल का स्टॉक बहुत कम है. And it is feared that it would last for only about 250 years. और ये आशंका है कि ये केवल लगभग 250 years तक चलेगा. And then mineral oil or crude oil. The second most important source of energy is petroleum or crude oil. Petroleum या कच्चा तेल. It is the second most important source of energy. It is drilled and refined. हमें इसे ड्रिल करके प्यूरिफाई किया जाता है. And petroleum is exhaustible like coal. Petroleum coal की तरह exhaustible है. Exhaustible means object that will end with one day. एक दिन ख़त्म हो जाएगा. The main products of crude oil are petrol, diesel, kerosene and gasoline. Most of the modern vehicles use either petrol, diesel or CNG. CNG is compressed natural gas, and at home we use LPG, liquefied petroleum gas. Then Rudolf Diesel invented the diesel engine. It is cheaper than petrol. Heavy vehicles use diesel as a fuel.
रडोल्फ डीजल ने इन्वेंट किया डीजल इंजन एंड हेवी व्हीकल्स ईंधन के रूप में डीजल का यूज़ करते हैं. Then natural gas. The latest source of energy is natural gas, which is not exhaustible. It is used as LPG for domestic use and as CNG in vehicles. It is cheaper and pollution free. The latest source of energy is natural gas, which is not exhaustible. एनर्जी का सबसे लेटेस्ट सोर्स है नेचुरल गैस. इट इज़ यूज्ड एज LPG फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड एज CNG इन व्हीकल्स. ये घर का यूज़ के लिए LPG के रूप में और CNG के रूप में व्हीकल में यूज़ किया जाता है. It is cheaper and pollution free. Natural gas is not exhaustible and cheaper and pollution free also. Then electricity. It is the most important source of energy. Electricity एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है. वी जनरेट 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम 3 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. देन हु इन्वेंटेड पेट्रोल इंजन? ये जर्मन साइंटिस्ट डेमलर, इन्होंने इन्वेंट किया पेट्रोल इंजन. देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहते पानी से, फ्लोइंग वाटर का फोर्स से प्रोड्यूस होता है. ह्यूज डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर्स एंड द वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वोयर्स. ह्यूज डैम्स नदियों के पार बनाए जाते हैं और जलाशयों में पानी जमा हो जाता है. वाटर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट and this force turns the turbines and thus electricity is generated. पानी काफ़ी ऊंचाई से गिरता है और ये फोर्स टर्बाइन को मोड़ देता है और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. दिस इज़ पोल्यूशन फ्री एंड चीप बट इट कैनॉट बी जनरेट एवरीवेयर. बट ये पोल्यूशन फ्री है, सस्ता भी है, बट इसे हर जगह प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है. देन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. Coal, petroleum and natural gas are used to generate thermal electricity. Coal, petroleum, natural gas ये तीनों यूज़ करते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. बट इट इज़ कॉस्टली एंड कॉजेस पोल्यूशन. बट ये महंगा है और पोल्यूशन का कारण भी बनाते हैं. देन व्हाट इज़ NTPC? फाइंड द फुल फॉर्म. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NTPC? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. That is the full form of NTPC. And the next is nuclear or atomic energy. It is pollution free, but great care is required at atomic plants to generate it. ये pollution free है, बट इसे बनाने के लिए एटॉमिक प्लांट्स में बहुत देखभाल, ध्यान का जरूरत है. It is not easy to use this energy. ये आसानी से यूज़ नहीं कर सकता है. And many developed countries use this energy to produce electricity. Many developed countries, कई विकसित देश इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए एटॉमिक एनर्जी यूज़ करते हैं. इंडिया हैज़ 6 न्यूक्लियर प्लांट्स. दे आर, हमारी इंडिया में हैं 6 न्यूक्लियर प्लांट्स. दे आर लोकेटेड एट नरोरा इन UP, रावतभाटा इन राजस्थान, ककरापारा इन गुजरात, तारापुर इन महाराष्ट्र, कैगा इन कर्नाटका एंड कल्पाकम इन तमिलनाडु. इनमें से सबसे ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट है तारापुर, महाराष्ट्र की तारापुर में. एंड देन अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, solar energy, wind energy, geothermal energy and tidal energy are other sources of energy. These are renewable sources. They will never exhaust and they are pollution free also. मतलब कभी भी समाप्त नहीं होंगे और ये pollution free भी है. Okay students, take care. Thank you.